चाहे आप कितने थके हुए हो, कोई है तो नाइट शिफ्ट करके आया यहाँ पर। अरे वाह, ये देखो नाइट शिफ्ट करने के बाद भी इतनी एनर्जी के साथ में लोग खड़े हैं। और आई नो कुछ लोग हैं जो रात भर कुछ कोई कहीं पे ड्राइव करके आए, कोई कहीं पे राइड करके आए, राइट। तो वो एनर्जी ना वो बाइकर्स को मिलकर अपने आप ही सामने आ जाती है। तो हालांकि मैंने एक्चुअली बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन बनाई थी, बट आज मैं सोच रहा हूँ मैंने प्रेजेंटेशन को नहीं चलाता हूँ, आज हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। तो जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं, हमारे पिछली हैदराबाद की किसी पिकअप का फोटो है, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट द कम्युनिटी इज स्ट्रेंथ। तो अभी हमारे यहाँ पे काफी सारे बाइकिंग क्लब्स मौजूद हैं यहाँ पर, राइट। कुछ के मेरे पास में होंगे, तो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिटी, कम्युनिटी इज द वर्ड व्हिच हैज द यूनिटी इन इट। अगर यूनिटी नहीं है तो कम्युनिटी नहीं है, अदरवाइज इट इज जस्ट अ बंच ऑफ पीपल, राइट। कई सारे लोग हैं, जैसे ट्रैफिक घूम रहा है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। कम्युनिटी बनाने के लिए वो यूनिटी बहुत जरूरी है। डजंट मैटर कि आप ए ग्रुप के हो, बी ग्रुप के हो, सी ग्रुप के हो। जैसे आज हमारे सामने यहाँ पर कई सारे क्लब्स हैं। वैसे ये पीछे एक फोटो था। बिफोर आई मूव अहेड, आई थिंक आई शुड थैंक दिस गाय हु ऑल नोज हिम। प्लीज से मोस्ट ऑफ यू, यस, ऑलराइट। जिनको नहीं पता कि काफी सारे हाथ नहीं ऊपर गए, सो ही इज संदीप गजर। He is the one who actually started XBHP. How many of you are aware about XBHP? Thank all of them. And if I have missed out on any, because मैंने तो सबसे मांगे थे भाई अपने दिन लोगों से, तो I want to put it here. So Punisher Squad is there. So मैं चाहूँगा कि before I start and talk about the main agenda that we have today, हमारे बाइकिंग क्लब्स, ये सारे हमारे तो चलो मैं से बोलता रहता। तो हमारे ये जो 9 बाइकिंग क्लब के लोगों से यहाँ पर हैं, सारे 9 क्लब अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 15 हो गया। लीडर देखो यार। तो पहले मैं चाहूंगा कि इसका भी नाम सबसे पहले परिषद स्क्वाड अपना ये रेडी, हाँ, शशि रेड्डी, बिकॉज़ आई ऑलवेज कॉल हिम डैडी, छोटा तुम्हारे इंतजार में माइक बंद हो गया, तो लाओ तुम्हारे पास, तो क्योंकि उसमें वो So I would really want you to introduce your club, क्योंकि how many of you know about Punisher Squad? Almost, but ये एक पूरी रोज सामने बैठी है जिसको नहीं पता। तो your audience is there, right? So there is a platform where to introduce the origin, the philosophy, and why you guys have started, and what is it that you want to promote. I know besides biking. देखो अपना क्या है, 6 नंबर है, अपना 6 नंबर है। I don't like it, what they get. प्रकाश बात से बहुत try to keep it very simple. These So we started off as a KTM group as first. We had a couple of KTM bikes, around 10-15 KTM bikes, and we just did one ride with the KTMs, and after that everything was multi-brand. We started off in 2017 as a different club, and eventually we started getting onto the racetrack. So KTM used to conduct these track sessions, and we used to attend them. And eventually we understood that there is a lot of potential for bikers to learn a lot of things. क्योंकि हम लोग नहीं होते, हमारे दिमाग में ये कीड़ा नहीं होता कि हमें तो बाइक चलानी है ना। हमारे को बाइक को एज अ कम्यूटर व्हीकल यूज नहीं करना है, हमारा लाइफस्टाइल है, राइट। हमारे अगर पेरेंट्स को हम लोग पूछते हैं और बात करते हैं, तो सबसे पहले उनके दिमाग में यही आता था शुरुआत में, अब तो खैर शायद नहीं आता हो, लेकिन पहले सबसे पहले आता था क्या बाइक चलाने की कौन सा स्टाइल है, ये कौन सा मतलब लाइफस्टाइल है कि भाई आपको कहीं करना है। कई लोग जो भी यूट्यूबिंग करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, है ना। कोई है एक के अलावा, प्रकाश भी करता है ना, हाँ क्या प्रकाश, आप भी ब्लॉगिंग करते हो ना, हाँ राइट। और कौन कौन है जो यहाँ पे ब्लॉगिंग करता है ना। चल गया
तो जब आप लोगों ने स्टार्ट किया था लोगों ने नहीं बोला कि मतलब ये क्या है, मतलब इससे क्या करोगे, और खास करके अगर उसको अपनी सोर्स ऑफ इनकम बना ले तो लोगों को लगता था ये तो सब तो ठीक है, करते क्या हो है ना। तो खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है मोरल व्हीकल्स, मोरली वेरी हाई। Hi guys, my name is Vishnu. I am the founder of Motovloggers Club. We found our club in 2020, post-COVID I can say. So our agenda is only one thing: we ride safe and responsibly. So I recommend the same thing, and I can say proudly that I've been into passionate rider. First was I can thanks Irfan and their team first of all, because I joined their club first before finding my passion. So earlier I was to ride with Royal Enfield and everything. Post that I found this group, and my club is I cannot say that, but still I'm free. I don't charge anything, but I respect every other clubs also. Main agenda is ride safe, wear helmet, stay no to drugs. That's it. जो भी कम्यूट करना है कुछ भी करो, हेलमेट पहन के करो बस. That's it. Next, we have Gear Up and Get Lost. So, Gear Up आपने कर लिया, अब next. Get Lost. Very interesting name. Like, why have you come up with this name? So we thought of crazy one. So why not this? Yeah. So we thought of a crazy title. So where we can say that motto needs to be there in our group name as well. So that is the reason behind the gear up and get lost. So it is like let's gear up and let's get lost together. So that is what the motto is. Hello everyone. So this is Naveen. So I'm founder of Gear Up and Get Lost. So we initially started in 2019. So we're into tours and off-roading as well. So our main motto is like safety first. Safety comes first, and then do whatever you want to. So safety in the sense like, so whatever you buy, so it is a one-time investment. So please, I recommend every biker to please take the proper gear, buy the proper gear, so that it will be very useful. You don't know what will happen in the next moment. So I request everyone to please do it and go safe. So yeah, so it was started in 2019. So that is our first ride to Goa. So that is Romania. So and then so we're into everywhere right now. So we did so many rides. So yeah, that's all I have to say. Yeah, thank you. Alright, that's great. So now you can get lost. Alright. So next is Indian Oil Corporation. No, sorry. Indian Oil Man. Yes. Please. ये आपने अपना नाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन क्यों रखा है वो बताओ. Thank you. Yeah, hi everyone. This is Prithvi. I'm one of the co-founder of Indian Off-Road Club. Jokes apart, and we founded in the year of 2023, and we are a group of riders who are passionate about doing off-roading, and we are into off-road, and we should have a proper skill set. Whenever we do off-roading, we need to be secure ourselves as well as the fellow riders who are coming across us. And we need to obey, as Vishnu bro said, we need to be responsible for ourselves as well as for the others as well. Thank you, and there are many motivations here, and we have been inspired by many fellow riders. And as a community, we want to grow well. And thank you for giving this opportunity, Manan, to represent our group here. And I wish many more such events happen in Hyderabad, where as a biking community we will be all united and spread our biking passion to the fellow members who are across in Hyderabad as well as in India. Thank you. So anything about more prominent members. But ATH, it started off with just a group of riders starting off, and it's completely agnostic to any specific brand or any specific
kind of riding style or anything. Just everybody is welcome. So we have all sorts of bikes, including 200cc bikes and a lot of Royal Enfields, lot of Himalayans, lot of other bikes also. So, and we do a lot of breakfast rides, go on a few rides, long distance rides also we have gone. Like today, I think some of them have gone to stateside over there. So, just let us come together. One of the there's a lot of focus zoom on it. there's a lot of focus on having content here, having audience and a certain level of so let's engage and join us if and when you can. Thank you. Thank you so much. And I hope मेरे मजाक को लोग मजाक ही मान रहे होंगे, right? It is just a joke. So ETH is Adventure Touring Hyderabad. Yes. All right. So we have Power Extreme. Yes. Hello everyone, my name is Mirza. I am the member of Power Extreme. I ride KTM 390 Adventure X. Well, Power Extreme is the group of all about like unity, peace, and oneness. We don't see any religion or which bike you ride and all. All are welcome in the group. We maintain unity and peace and oneness basically. We don't see what CC bike you ride. Our group founder is Krishna Lalit Murthy. Today is not here, he is on a journey over some place. So on the ride, what I have noticed is that sleep is the most important thing where everyone lags back. If you have a proper sleep, then only you will be able to enjoy your ride. Yeah. That's the thing, and yeah, pleasure to meet you all. Thank you. Thank you so much. So for bikers यार नींद की बात नहीं करनी चाहिए, नींद आ जाती है, right? So ऐसे बोलते हैं मतलब जैसे अगर biker हो or even if it is a driver, if you are sitting next to a driver, you should not sleep. A driver fall asleep as well. So let's not talk about sleep. All right, do we have anybody from TSAP? I know this is Telangana and Andhra Pradesh. I guess Pawan is not here. Pawan V gears. कोई जानता हो तो नहीं आया आई नो वो तो नहीं आएगा वो मुझे पता था उसने मेरे को मैसेज किया था बट आई थॉट उनके ग्रुप से भी कोई आ रहा है ओके एड्रेनलिन एचक्यू ये आई गेस समीना जी का है ग्रुप राइट समीना जी तो इज नॉट वेल वी नो दैट ठीक है एनी ग्रुप दैट वी हैव मिस्ड अरे हां जी बीबीसी CNN? Hello everyone, my name is Kishore. So I'm representing Tyres Riders Hyderabad. I'm one of the co-founder and our main founder is Irfan. Request Irfan to join me. So it's like we call like brother from another mother, so that's what we are. Since 2018, we started with a Royal Enfield one ride, and then with like 40 members who joined on that day. With 40, now it's more than 350 riders, Royal Enfield riders today. And since day one, only thing we follow is the discipline, safety, and व्यूज पाने के लिए लड़ाई दिखाते हैं किसी का एक्सीडेंट दिखा रहे हैं तो जानबूझ के एक्सीडेंट करके दिखाते हैं हाईवे एक्सीडेंट हो गया है ना so which is the wrong thing so we should promote good things among the bikers because we have the power to influence people not only from our own generation आगे वाली जनरेशन जो आ रही है जो आने वाले बाइकर्स बनेंगे आने वाले यूट्यूबर्स बनेंगे है ना competition all right so fine any other group that's the one last one I think Prakash आपने भी कुछ बोल रहा था ना हाँ मैं तो
Like I recently started this biking group called Backpacking Brothers. We are like into travel and biking. Like most of my age people are not into biking. They all got the bikes, but they have used it only for grocery stuff. Like I have been to whole South India except Kerala. I've done 20,000 kilometers in last 3 months. Wow. I've been there. I've learned a lot from it. Like I'm 20 right now. 20 में 20,000. Like I have learned many things from many bikers, and my main motivation was Sunny brother from the Motographer and you ride with Vijana. We have watched them, and I also thought why not let's teach our friends to ride responsible and get into biking. I recently started couple of trips, like breakfast it's not a really long one. I'm pretty sure I was only the one. Now we are like 45 people and he's from my community. Like we are like underrated riders. Like we go alone. Just like we shouldn't go alone. We are all brother. One single thing which is like motorcycling. कोई ऑफ-रोडिंग करता है, कोई टूरिंग करता है, कोई रेसिंग में है. हाँ एक है. हाँ एक को तो मैं जानता हूँ. आप भी हो. 2 हैं. और कोई? अरे या भाई कर रहे हो क्या हाथ खड़ा कर रहे हो? अच्छा. ओके और कोई है जो रेसिंग करता है नॉट ओनली ऑन ट्रैक मतलब ऑफ रोड पर भी. ऑफ रोड सब लोग हैं. क्यों यहाँ पर ऑफ रोड ट्रैक बहुत ज्यादा है. यहाँ की सड़कों पर मुझे इतने गड्ढे से दिखे अभी हमारे एरिया नहीं. टू बी वेरी ऑनेस्ट आफ्टर दिल्ली हैदराबाद मेरे को एक ऐसी जगह लगती है जहाँ पर मुझे लगता है हाँ रोड्स हैं चलाने के लिए. वरना तो किसी भी शहर में चले जाओ मतलब दिल्ली से भी बेटर नोएडा है वैसे तो. लेकिन उसके अलावा कहीं पर भी चले जाओ ना ऐसा लगता है चलाते कहाँ हैं लोग यहाँ पे गाड़ियाँ. चलाने के लिए सबको बाहर ही जाना पड़ता है. हाईवे छोड़ के मतलब हाईवे पकड़ के बाहर जाना पड़ता है. तो ठीक है. नाउ वी ऑल टॉक अबाउट कि भाई एडवेंचर करना है, टूरिंग करनी है और रेसिंग करनी है. लेकिन सब चीजों के लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है हमारा बेटर हाफ. दैट इज अवर बाइक. वी ऑल टॉक अबाउट कि यार हमें अपने आप को सेफ रखना है. बट मेनी टाइम्स वी फॉरगेट कि हमारे को अपनी बाइक को सेफ रखना है. क्योंकि अगर बाइक सेफ नहीं होगी तो हमारे को बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जहाँ पे सारे राइडिंग गियर्स टेस्ट करने पड़ेंगे. राइट. कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं मतलब अपॉर्चुनिटी बोल रहा हूँ राइडिंग गियर टेस्ट करने के लिए जहाँ पर बाइक सही से अगर मेंटेन नहीं है तो आपको ये जरूरत पड़ सकती है. क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज ऐसी आप इग्नोर कर सकते हो बाइक के अंदर. टायर तो है. टायर की तो हम बात ही करेंगे अभी बहुत सारे. ब्रेक्स यस. और कुछ कोई रेडिएटर ऑयल बोलना चाहते हैं. रेडिएटर लूब कूलेंट इंजन ऑयल टॉप अप. इंजन ऑयल टॉप अप. नहीं मैंने रेडिएटर के लिए अभी स्पेसिफिकली किसी को पॉइंट आउट कर रहा है. बोलना चाहता है क्या. So not everybody knows that, right? How to do it. So वो भी एक बहुत जरूरी चीज है कि कम्युनिटी में जब हम लोग होते हैं ना तो that is why we say I the biker we the power. अगर आपको कोई चीज नहीं भी आती है, अगर आप सिर्फ I the biker हो, सिर्फ एक अकेले बाइकर हो तो you may fall under lot of issues. But when you are connected with lot of different bikers you become powerful. So now power is not only in the numbers. Power is also in the form of knowledge. हो सकता है भाई मेरी बाइक में कुछ खराबी हो गई, मुझे पता है अरे ये चीज ना प्रकाश बता सकता है मुझे कैसे होगा, ये चीज मेरे को विजय बता सकता है कैसे ठीक होगी. तो मैं सीधा फोन करूंगा, बताऊंगा यार मैं रास्ते में खड़ा हूँ, बताना क्या करूँ. वो मुझे गाइड कर देंगे. तो मेरे को किसी मैकेनिक की वेट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही मैकेनिक बन जाऊंगा. ठीक है ना. तो वो सब चीजें हैं. फिर और कुछ एयर प्रेशर. एयर प्रेशर हाँ वो टायर का ही पार्ट हो गया. सॉरी व्हाट. लाइट्स. चेन लूब. क्लच हाँ मतलब अगर अभी केबल वाली क्लच है तो चेन लूब. चेन इन जनरल नॉट ओनली चेन लूप. वो ढीली चेन पे लूप कर दो वो अलग से निकल के भाग जाएगी. हाँ और कुछ हाँ मतलब वो तो बहुत ही जरूरी है. मतलब वरना रास्ते में टायर कहीं और आप कहीं हो गए है ना. मतलब इंजन नहीं पड़ा होगा, टायर नहीं पड़ा होगा, हेडलाइट नहीं पड़ी होगी, इंसान तो पता नहीं कहीं पड़ा होगा. और कुछ नहीं है ना. हाँ मतलब ऑफ कोर्स हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया. तो अभी ऑफ कोर्स हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम लोग हर
तो चिटिंग बंद हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आंखें बंद करनी है, ठीक है, आंखें बंद कर लो। मैं आपको एक एक ये टायर के पीस पकड़ाऊंगा, लेट अस सी आप लोग समझ पाते हो। आपको सबको बताना है कि ये कौन सा कैटेगरी का टायर है। पहले तो ये बताओ कितनी कैटेगरी के टायर्स होते हैं, कौन बताएगा? मतलब प्राइमरीली उसके 3 डिविजन्स होते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ, वो कौन से होते हैं, कौन बताएगा? आप में से कौन बताएगा? एक ही बंदा तीनों बताओ, चलो कौन बताएगा? ऑफ रोड और अपने ट्रैक और जो ट्रैक पे जाते हैं स्मूथ स्पीड ट्रैक, रेसिंग ट्रैक और जो सो डुअल पर्पस ट्रैक्स जो स्ट्रीट पे भी चलते हैं और अपने ऑफ रोड पे भी चलते हैं, टूर Radial and bias. Same thing, road, off-road and on-road. ठीक है, परफेक्टली। तो दे हैव सेड इट करेक्टली। देखता हूँ मेरे पास में आपको कहीं तो था क्या? हाँ, यस। So these are the main 3 categories because of course मैंने बोला तो I just wanted to show it visually. So we have off-road tires, we have dual sport tires, and we have street/on-road tires. वो जो on-road tires हैं वो आप कहीं पर भी चला सकते हो। मतलब कहीं पर भी मतलब ऑन रोड या फिर ट्रैक पर भी लेके जा सकते हो उन टायर्स को। ऑन रोड के अंदर एक और डिवीजन होता है स्लिक टायर्स, जो स्पेसिफिकली रेसिंग के लिए यूज होते हैं। इनमें एक और चीज होती है कंपाउंड्स होते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट कंपाउंड्स लेटर। तो कंपाउंड बहुत जरूरी होता है समझना हमारे को, क्योंकि हम लोग कई बार सिर्फ डिजाइन देख के खरीद लेते हैं कि देखने में अच्छा लग रहा है, या कई बार हम लोग देखते हैं, सुन लेते हैं, अरे यार ये टायर ना यार 10-10 हज़ार किलोमीटर तो घिसते ही नहीं, लेकिन हम ये नहीं देखते हमारा राइडिंग स्टाइल क्या है, ठीक है? वो उसमें समझना जरूरी होता है वो जो घिसते नहीं वो क्यों नहीं घिसते हैं, ठीक है? ओके, तो अभी आंखें बंद कर लो, मैं आपको ना एक एक ये टायर सैंपल पकड़ाऊंगा। लेट अस सी हाउ मच वी अंडरस्टैंड आवर टायर्स, ठीक है? करो आंखें बंद, वो तो इन्होंने तो और क्या एवरीवन लाइक नॉट ऑन दैट साइड, ओनली ऑन दिस साइड। ओए आखिरी बंद कर दो तब तक आप लोग अपने टायर्स को टेस्ट करते रहो, फील करो। दूसरा कुछ फील मत कर लेना। अभी कोई भी आगे बोलेगा, मैं इसको बोलूंगा सिर्फ वो आगे बोल के सिर्फ अपने तो बोलने से पहले बताएगा कि वो उसके हाथ में जो टायर है वो कौन सा है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं TVS से। नहीं आगे ही बोलिए, आप फिर बताओ कौन सा टायर है, कौन से पेडल का टायर है? ये मुझे लग रहा है बैक टायर का होगा, so either it's off-road tire or it is possibly a rear tire for a street kind of for a street it's soft, so it's more limited ones, so it's more likely to be something that's more for faster or higher resistance. So आप आगे ओपन कर सकते हो, बाकी चल रही है। Next we move to get lost. बताओ। Very well. It's street. एक सेकंड मैं माइक ले जा रहा हूँ, बाकी पता नहीं चलता। मुझे नहीं समझ आता, इसको बात करना पड़ेगा। So it is a sling/straight. So it can be used for only on-road. On-road. Yes. Yeah. That's what I can feel right now. दोबारा नहीं उसको? हाँ नहीं उसको मैं उसको बोल रहा था। ओके ठीक है, तो आप आगे बोलो। Alright, हाँ। तो अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बताओ कौन सा है? आप बोलो बाइक है। Yeah, I presume it is on-road type. So, which is a rear tire, that's what I feel. Why do you feel that? I don't know, after touching this grip, right, I just realized it is an on-road tire.
Okay. Yeah. So what? So you are just feeling it. It is a, It is an on-road tire, yeah. but not technically you don't know why. Technically, I don't see any difference because all tire seems to be a rubber material. That is one thing which we want to tell people that not all tires are same. Yeah. Right? Yes, correct. Okay. Yeah. So you can open the eyes. Right? Okay, and you will not say anything. Next we move to moral lighter. Yeah, it is a radial and dual purpose tire. Radial and dual purpose tire. Yeah. अच्छा तो आगे मत बोला सब कुछ दिखाओ ये टायर ना सब कुछ दिखा है ओके आप आगे बोलो अरे आगे Probably a 150 and a 60 section tire. Road purpose, good water channeling. Doesn't seem to be steel braided. At least the part that was cut doesn't seem to be steel braided. It could be. what you have in the prototype so Yeah, so probably a 150 60 section street tire for probably a 17 or a 16 inch tires. Rims. quite specific. All right, great. Open your eyes, please. Last we have Taurus. Yeah, I feel like it's a 140 and this is for tour and sport. I mean, real multi-purpose. That's what I feel. Multi-purpose. I mean, you can use it on, yeah. And tour. What is the definition for dual sport? I mean, not dual sport, I mean to say, both on track you can use for racing and even you can use it for. All right, you can open the eyes. It's the last about the children. ये टायर, these tires seem to feel like multi-purpose tires, like which are used in commuter bikes like SP 125 and 125 as such. Those bikes are used in off-road as well as in cities like on road. Why do you think it's for a commuter segment bike? Because in most of the commuter segment bikes, design feels like this on the tire, which I'm feeling in this on this. Yeah. All right, you go with Alright. So how many of you think you were exactly on dot in guessing your tires? So, yeah, so that is the good thing. Be confident. All of you were. So that means we all understand at least our tires, right? We understand what our tires feel like and what are they meant for, right? Now, I would want all of you. एक तो आपने मुझे explain किया feel करके. I want all of you to explain one by one that what is it that why you felt कि ये off-road tire नहीं है, ये on-road tire है, and this is also a race performance specific tire. Why do you felt like that? So tire. आप में से कौन है ये किसकी बाइक पे फिट होगा? यूनिटी में रियल है 910 है Most of the commuter motorcycles have this. yes All economics. most of the commuter bikes. So that means as okay हम उसको और आसान कर देते हैं क्वेश्चन को कौन सी कैटेगरी की बाइक होगी है ना जैसे एडवेंचर बाइक है टूरिंग बाइक है कंप्यूटर बाइक है स्पोर्ट्स बाइक है उस तरीके से राइट तो दिस इज आंसर्ड सेकंड अच्छा इन्होंने तो खुद ही इतना डिटेल में इसका आंसर दे दिया था कि सबको ऑलरेडी पता है आई गेस सबने आंसर दे दिया था राइट चलो तो फिर हम इस क्वेश्चन आंसर को यहीं पे खत्म करते हैं थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच आई एम श्योर आप लोग ऑलरेडी लाखों करोड़ों रुपए खर्च रहे हो R&D पर लेकिन वो होता है ना कि मतलब आपने तो बना दिया लेकिन जो चलाने वाला है ना उसके मन में हमेशा खटकता है यार ये कम है ये और अच्छा हो सकता था So this one question. Thanks to everyone that you are like following your passion. So we were unfortunate. I started doing biking at the age of 12. My first bike was RX100. So I lost somewhere. Congratulations to everyone. So this two question. One question. Anyone is having KTM 390 here? Yeah.
मतलब कोई सी भी ड्यूक एडवेंचर Here. So any high-end vehicle, any commuter segment vehicle, like I saw someone with Tyres 100. So if you see, requirements are entirely different. If we talk about catering premium, so it's kind of high-end vehicle coming with higher season. Requirements are very different. If you are coming with RX100, your requirements are different. Can I I'd like to know your requirements while riding. What is your requirement from a tire perspective? So I think first requirement is grip and second is ride control and training. Yeah. Slippery. So handling is like maneuvering and handling it's difficult. Anything else or yeah. एक एक चीज के बारे में बात करेंगे वन बाय वन. What is 150? What is 60? What is last? What is 70? 150 radius. 150 technical terms we call it shoulder. Or basically the contact patch. Yeah. You can explain it using this. See, this is 150 where it, the contact is on the road. Millimeters, right? 150 millimeters. 150 millimeters. I don't know the metric, but it's 150 millimeters. When you say by 60, it's the length of your sidewall. Based on the performance, the power delivery of your machine, this gets thinner or thicker. What is 60? Bigger. 60 millimeters, the sidewall. Are you sure 60 millimeters? Yes. Are you sure? Maybe not. Because if this is 150, this should be 60. Yes, I'm confident. No, what is 60? 60 millimeters, I'm confident. Are you sure? Yes, 100%. If this is 150, this can be 60. No, you're not correct. I'll explain this. 60%. That is Of called 150. Yeah, that is called expect ratio. Okay, and this is called 150. You are exactly right. This is called tread width, and this is called expect ratio. Okay. Yeah, so something new that I've learned. That's surprising, but yeah. So 150 is the base, 60 is your sidewall in terms of measurement. So now that I know it's aspect ratio, not millimeters. It is in millimeters, but 60% Of 150. Yeah, 150. Okay. R is basically a radial tire, Right. which means you have a better support. It's not just rubber, it has some other material in it. Mostly metal, steel braided lines, which will give you more grip. When you're leaning or something, they expand accordingly. So just want a little more info from Abhishek on this. What makes it a radial? Right, because there are different tires. Right. So what makes it radial? Why it is different or why it is better than other tires? Right. So there is a based on construction. Basically, there are three types of tire overall. That is bias, radial, and cross belted, like bias belted kind of. But in two-wheeler, radial and bias are very common. Others are for TVP and all, matlab truck bus segment. So for motorcycle, there are basically two tires. One is bias and fabric. Okay, inside tire fabric is inside. So this is what we call fly line. Okay, so this will start from here and it will end here. So that will come in radial. So it will be 90 degree. In case of bias, it will be cross plane. It will start from 45. It can go up to like 22, 27 that way, based on your requirements. So it will be cross plane. So cross plane tires are called as bias tires, and this fly line with 90 degree are called as radial tire. Nowadays in case of radial also there are two types of radial. One is fabric radial, another is steel belted radial. So in case of steel belted radial, what will happen? This line will be 90 degree, so this will follow this bar, and steel belt will be this 0 degree. So that will give you strength. So when you have this section by 0, it will give you highest stiffness. So steel belted tires are very stiff compared to fabric belted.
Anyone? H. Speed rating. What is the rating of the tire or load rating of the tire? It is speed rating, not load rating. Yes, this is speed. Acha, what is the difference between speed rating and load rating? कौन बताएगा? Speed rating is for speed, load rating is for speed. देखो टायर खरीदने हम लोग जाते हैं, हमें पता नहीं हम खरीद कर रहे हैं. Load rating pertains to tires. नहीं, लोड होता है. It is a लोड तो कोई भी टायर ले रहा है ना. लोड रेटिंग तो सबका होता है. It's preload. Like a hint, it's preload. It's not It is- load tire rating. You can It is mentioned in the name itself. Yeah. Load rating and speed rating. Load is how many kilos, how much maximum weight the tire can take. load rating means up to what weight the tire can sustain. So after 30,000 he can change his tires. And your question, there is a tread wear indicator in all the tires. The full tire will be having tread indicators. It will be mentioned as TWI. Yeah. A triangle will be there. So TWI. Those are standard requirements we have to follow across globe. It should be mentioned. So 6 locations it will be there on a motorcycle, and minimum 4 locations it will be there on a scooter tire. Okay. అడిగా అడిగా ఎదలోన నడిగా కదిలే క్షణమా చలియేదని నన్నే మరిచా తన పేరుని తలిచా